अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे द नेक्स्ट असेसमेंट मेथड, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इससे पहले जो हमारी दो सेशंस हुई थी उसमें हमने यह डिस्कस किया था कि हम अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो किस तरह हम असेस कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स पर बात की, जिसमें एमसीक्यूज थी, इसे क्वेश्चन भी थी, मॉडिफाइड इसे क्वेश्चन थी। आज जो हम बात करेंगे ये हम अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं उनमें जो डिफरेंट कम्पिटेंसीज होती हैं, डेमोस्ट्रेशन होती हैं, एग्जामिनेशन स्किल्स होती हैं, ट्रीटमेंट स्किल्स होती हैं, उनमें डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली जो है वो पेशेंट पर करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करेंगे कि हाउ दे नो अबाउट दैट। तो उसके हम असेसमेंट मेथड पर बात करेंगे, कौन कौन सी असेसमेंट असेसमेंट मेथड है। हम समराइज करेंगे इस सेशन में एक एक को, लेकिन इसमें से एक जो हमारे ऑस्पी एंड ऑस्की हैं, क्योंकि ये बहुत रेगुलरली यूज होती हैं इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ हेल्थ साइंसेज एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड असेसमेंट मेथड हियर इन एवरी ईयर इन द मेडिकल स्कूल्स। इसलिए हम इस सेशन में उस मुख्तलिफ जितनी भी डिफरेंट असेसमेंट में उस पर ब्रीफली बात करेंगे, और एक अलग सेशन हमारा नेक्स्ट होगा जिसमें हम स्पेसिफिकली डिटेल से आस्पी एंड आस्पी पर बात करेंगे कि ये है क्या चीज़, ये इसकी प्रोसीजर किस तरह करते हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, बाकी जो इसकी डिटेल वगैरह है, इस पर एक अलग सेशन हमारा होगा। सिमिलरली प्रीवियस जो हम नॉलेज असेसमेंट कर रहे थे, तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो हेल्थ साइंसेस एंड मेडिकल स्टूडेंट्स में यूज होती हैं, दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब नॉलेज के असेसमेंट से हम अलग सा सेशन मल्टीपल चॉइस पर लेंगे कि मल्टीपल चॉइस की हम इनार्ड में डिस्कस करेंगे, उसकी हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसकी पैथोलॉजी के लिए फिर हम मैनेजमेंट देंगे, और फिर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह के फ्लॉज जो है ये एमसीक्यूज में हो सकते हैं, और उस फ्लॉस को हम किस तरह जो है हल कर सकते हैं। गलती जो है, क्या क्या गलती हो सकती है और क्या क्या गलती जो है हमें जो है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, और उस गलती की फिर हम मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे। एंड एज वी डिस्कस्ड कि प्रैक्टिकल असेसमेंट से उसकी जो परफॉर्मेंस असेसमेंट से हम ऑस्की एंड ऑस्पी पर डिटेल से बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो जितनी भी हमारे असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल असेसमेंट है हमारे स्टूडेंट्स की, ये इसको फर्दर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दिस इज द परफॉर्मेंस इन वाइट्रो एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन वीवो या वाइवो। अब इसमें जो वाइट्रो एंड वाइवो जो है उसमें डिफरेंस क्या है? Initially when we are instructing, we are demonstrating to our students, तो मोस्टली जो है हम उसको डेमी पेशेंट मॉडल्स पर करते हैं, यानी सिमुलेशन होती हैं। जबकि नेक्स्ट लेवल पर जब वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और इस लेवल पर वो एक आखिरी लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो रियल कंडीशन, रियल लाइफ कंडीशन, रियल पेशेंट पर आ जाते हैं। हमने इनिशियल सेशंस में जब हम ब्लूम टेक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने साइकोमोटर डोमेन की बात की थी। तो यही वो साइकोमोटर डोमेन की इनिशियल थ्री जो P1 P2 P3 है, ये हमारे कंडीशन जो है वो स्टैंडर्डाइज कंडीशन या वी कैन से दैट कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है। जबकि लास्ट P4 जो है दैट इज they have been dealing the real patient, they are working in hospital, they are working in wards। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर उसकी भी हम असेसमेंट करते हैं। तो ये दोनों असेसमेंट जो है कि हम रियल लाइफ असेसमेंट एज वेल एज द सिमुलेशन या स्टैंडर्डाइज कंडीशन असेसमेंट, इन दोनों असेसमेंट जो है कि एक जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि वी विल असेस देयर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। उसमें कौन से कंपोनेंट जो है ये मिस होती हैं, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। और इस प्रैक्टिकल में एक जो कंपोनेंट साथ चलती है वो इफेक्टिव डोमेन, वो हम एज ऑब्जर्वर के तौर पर वो भी हम साथ साथ असेस करते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पेशेंट जाता है असेसमेंट के लिए, वहाँ से उससे पहले वो सलाम करता है, फिर उससे कंसेंट लेता है। तो ये कंसेंट जो है एक्चुअली दिस इज दैट इफेक्टिव डोमेन। या पेशेंट जो बात कर रहा होता है और ये उसकी बात को गौर से सुन रहा है और उसकी बात को तरजीह एंड वैल्यू दे रहा है, उसके पर रिस्पांस भी दे रहा है,
तो ये जो है इफेक्टिव डोमेन है। तो ये भी हम जब असेसमेंट करते हैं इस अपनी स्टूडेंट्स की, तो साइकोमोटर डोमेन के साथ साथ जो इफेक्टिव डोमेन है, जो पेशेंट वैल्यूज है, जो उसकी फीलिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो बोथ कैटेगरीज, चाहे ये स्टैंडर्डाइज कंडीशन हो या रियल लाइफ इन्वायरमेंट हो, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल होती है और बिहेवियर। तो ये बिहेवियर से मुराद जो है, दिस इज द इफेक्टिव डोमेन। और फिर जो है ये कंटिन्यूस भी हो सकती हैं, या हम इसको एक फिक्स पॉइंट पर भी असेस कर सकते हैं कि वहां पर ये क्या कर रहे होते हैं। और फिर इसमें ऑब्जर्वर जो है वो अपनी इंटरप्शन नहीं करता ड्यूरिंग द असेसमेंट। वो डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट जो है वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन जारी रखेगा, बट द ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व द कंप्लीट दैट रोल, उस रोल प्ले को, और साथ साथ जो है उसकी मार्किंग भी करेगा। तो एग्जामिनर जो है उसका होना उधर जरूरी है। बहुत सारे टूल जो हैं इस पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे उसमें रेटिंग स्केल्स आते हैं, चेक लिस्ट आती हैं, डिफरेंट एग्जामिनर रिपोर्ट आते हैं विच कैन बी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये टूल्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड टू असिस्ट इन द मार्किंग और असेसमेंट ऑफ सच डेमोन्स्ट्रेशन, जो इन बोथ सिचुएशन इन रियल लाइफ एंड द controlled environment. Checklist and rating scales, they are used as the scoring methods in various forms of assessment. और इसमें मुख्तलिफ जो है ये हो सकते हैं, like we can say that the most commonly used, this is the objective structure clinical examination or objective structure practical examination, which is the OSCE and the OSPE. Similarly, there is another way which is known as the DOPS, which is the direct observation of the procedure skills. Specifically, this is used for the assessment of our students when they are doing some practical examination, diagnostic procedures on the patients. Peer assessment, the self-assessment, and the patient service. These all are the different methods which can be used for the assessment of our students for their practical skills. The assessment of actual performance, what the doctor does in practice, is actually the ultimate goal of a valid assessment of clinical competencies. However, despite the face validity of this and training assessment, problem of inadequate reliability due to lack of standardization, limited observation, and limited sampling skills are cause of concern and limit their use as summative, high stakes, or qualifying examinations. एक आम सी इसमें बात एक प्रॉब्लम जो आ जाती है कि इसमें इसकी जो रिलेबिलिटी है वो थोड़ी-सी इफ़ेक्ट होती है, वो थोड़ी-सी कम है। अदरवाइज़ उसकी फेस वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, बट रिलेबिलिटी जो है वो थोड़ी-सी वीक होती है। एंड यही एक वजह है कि इसमें इसका जो समेटिव फॉर्म में या जो क्वालि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में इसका रोल जो है बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि बिकॉज़ ऑफ इट्स इनएडिक्वेट रिलायबिलिटी। इसके अलावा इसका जो सैंपलिंग स्किल है वो भी बहुत चूँकि टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, तो इसकी जो सैंपलिंग है आपके ये बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, एंड ऑब्जर्वेशन के दौरान भी जो है देयर में बी द एग्जामिनर टू एग्जामिनर जो है रिलेबिलिटी जो है ये डिफरेंट आती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि व्हाई दे हैव लिमिट्स द यूज़ in the final term exam or in the high level and qualifying examination. Though they have good face validity, but they have weak reliability, and that is the reason why they are not used so commonly in the higher qualifying examinations. To mimic real condition, चूंकि real आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि if the assessment the student have such problem or mistake, so it might be one of the mistake, and maybe for the patient point of view से थोड़ी सी गलती हो सकती है, उसके नुकसान हो सकती हैं। तो इसलिए हम जो है रियल कंडीशन की मिमिक कंडीशन या हम सिमुलेटेड कंडीशन ले सकते हैं। तो assessment and simulated setting have been designed to assess performance such as the OSPE and OSCE, और इसकी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, if there is mistake तो वो पेशेंट के लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि पेशेंट तो रियल होता नहीं है, तो ऐसे कोई इश्यू नहीं होगी।
चेकलिस्ट विच कैन बी यूज्ड, और ये चेकलिस्ट जो है पहले से हर एक स्किल को डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक डाउन किया जाता है, और फिर हर एक को एक मार्क्स दिया जाता है, एंड फिर चेक किया जाता है उस चेकलिस्ट उसकी जो प्रैक्टिकल स्किल कर रहा होता है। सो द ऑब्जर्वर विल चेक अकॉर्डिंग टू दैट चेकलिस्ट कि उसने कंसेंट लिया, यस उसको मार्क दिया, उसने पहले उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उसने ये किया, उसने वो किया, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे और वो चेकलिस्ट में पहले से, और ये चेकलिस्ट जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सा होगा, और यही वजह है कि इसकी फेस वैल्यू तो ज्यादा होगी। लेकिन फिर अगर यही चेकलिस्ट जो है या यही ऑब्जर्वेशन जो है कोई और बंदा करे तो माइट भी उसकी रेबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड आएगी। तो चेकलिस्ट जो है दे आर वेरी यूजफुल फॉर असेसिंग एनी competence और competency इन आवर स्टूडेंट्स, और इसी में competency जो है इसको ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है टू स्पेसिफिक बिहेवियर और एक्शन दे कैन बी ईदर डन और नॉट डन। जैसे हमने पहले कहा कि फिर एक एक कंपोनेंट को जो चेक किया जाता है कि इन केस इफ इट वाज डन प्रॉपरली तो इसको दिया जाता है मार्क्स, एंड इफ इट वाज डन बट इट वाज improperly done या wrongly done तो भी इसकी जो है मार्क्स डिडक्ट होंगी। It is recommended that poor detailed checklists should be avoided as they trivialize the task and threaten validity. इसमें ये होता है कि फिर जो लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं, या इसमें ऐसी चीज़ें जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो हो या ना हो, तो इसलिए जो है बहुत क्राउडेड कंपोनेंट्स वाली यानी बहुत ओवर डिटेल चेकलिस्ट जो है ये नहीं होनी चाहिए। द रीजन इज दैट जिस तरह हम फेस वैल्यू अच्छी होती है इन चेकलिस्ट की, तो दिस क्राउडेड एंड ओवर डिटेल चेकलिस्ट दे कैन have a threat for that validity of those checklists. So ज्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, वो कंपोनेंट्स बहुत कम कंपोनेंट्स होने चाहिए, और वो कंपोनेंट्स होने चाहिए जो जरूरी होते हैं और जो जिनके मिस होने से एक नुकसान हो सकता है, सो वही कंपोनेंट जो है होनी चाहिए। So global rating provide a better reflection of the expertise than detailed checklist, और आगे हम एग्जांपल भी देंगे। It is one of the best alternative to the detailed checklist. This is an example of a checklist. Just for example, this is the assessment or the procedure is the epidural anesthesia, and there are 26 component, and the observer will check and will assess the student, observe the student that each component is done or not. Just for example, in component one, we have ensures patient is positioned comfortably and safely in the middle of the bed. अब दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब वो पोजीशन कर रहा होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया तो उसके लिए पेशेंट की पोजीशन उसकी जो है सेफ है कि नहीं है वो इन द मिडल ऑफ द बेड। then the second is adjust height of the bed appropriately, carefully prepares sterile work surface, then and so on. And if we check in the end, there are 27 one that fixes the epidural. Okay, okay, sorry. सो सॉरी फिक्सेस द एपिड्यूरल कैथेटर सिक्योरली, सही। तो ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो इस एक एग्जांपल चेकलिस्ट। लेकिन यहाँ तक अगर आप देखिए दिस इज टू क्राउडेड, इसमें बहुत ज्यादा जो है और एक एक को फिर चेक करना थोड़ा सा ये उसकी वैलिडिटी जो है थोड़ी सी इफेक्ट कर सकती है। बट दिस इज एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट कि द स्टूडेंट्स जो है वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब कर रहा होता है, और अब जो ऑब्जर्वर है जो एग्जामिनर है वो उस असेसमेंट को असेस करेगा और इसी को फिर वो मार्क्स देगा कि इट वाज डन एप्रोप्रिएटली एंड दिस वाज नॉट डन एप्रोप्रिएटली, उसके मुताबिक फिर उसको मार्क्स जो है दी जाती हैं। सही। इसके अलावा this is another checklist for the catheterization skill using the simulation, and these are the different steps, and the observer or the examiner will just click on the yes and no and will write that either it was done or it was not done. Yes, for example, justified site selection, it was okay, it was not okay. Justified catheter selection, he was जो स्टूडेंट है he she उसने जो होना चाहिए वही कैथेटर यूज किया है, या उसकी जो है
गलत कैटेटर है, साइज जो है मैटर करती हैं। तो ये जो है, या इंजेक्शन ऑफ साइट जो है, ये जहाँ से लेना चाहिए, इंजेक्शन जहाँ का साइट होनी चाहिए वो है या नहीं है, तो ये एक एक स्टेप को फिर वो चेक करेगा। तो ये डिफरेंट जो है स्टेप्स हैं, और एक एक स्टेप को फिर वो असिस्ट करेगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द चेकलिस्ट। नाउ दिस इज द ग्लोबल रेटिंग। ग्लोबल रेटिंग जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है चेकलिस्ट से। द रीजन इज दैट कि चेकलिस्ट में देर इज ओनली डन और अनडन, या डन अप्रोप्रिएटली, अनडन और डन इनअप्रोप्रिएटली, ये तीन जो है ऑप्शन हो सकते हैं। But on the other hand, if this is a global rating scale, and this global rating scale एक प्रोसीजर के लिए सपोज यूज होती है, तो इसमें डिफरेंट लाइकट स्केल जैसी होती हैं कि सपोज दिस इज द पहला स्टेप है कि प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर, रेस्पेक्ट फॉर द टिश्यू, टाइम एंड मोशन, और फिर जो है उस प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर की डिफरेंट जो है उसकी ऑप्शंस आ सकते हैं, और एक एक को फिर वो जो है मार्क देगा 1 2 3 4 5। As compared to the checklist, it has more detail, but it will take less time, और इसकी validity जो है वो भी affect नहीं होगी। So this is one of the best alternative to the checklist, as it have the detail as well as it can have its proper and strong validity. This is another global rating scale for the assessment of the central venous catheterization skill using the simulation. And if we can see here, again, these are the different components. If we check the components, they are very less as compared to the previous we discussed in the checklist. And here, there are a different assessment or procedures that either if the not competent to perform independently, borderline competence to perform independently, competent to perform independently. So ये जो है उसने और भी ज्यादा बारीकी से उस assessment कर रहा है, and here is it is uh, that is much more detailed than the checklist, and that's why global rating have that superiority than the checklist, that it have the detail as well as it will not affect the face validity. Checklist development requires consensus by the several experts on the essential behaviors, actions, and criteria for evaluating performance. Specifically, why this consensus is necessary? Just to eliminate and remove those unimportant components from, and to avoid that crowded detail, a crowded checklist. If there is some components which if they are missing, that will doesn't matter. So यही जो है इसकी लिए कंसेंसस होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए among the expert, ताकि एक तो इससे वो अनइम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें रिमूव किया जाए, और इसकी जो ऐसी कंपोनेंट्स रखा जाए जिससे उसकी वैलिडिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। दिस इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ कंटेंट एंड द स्कोरिंग रूल्स, एंड the consensus of the expert say this is the best way to ensuring the validity of the content. Evaluate who are trained in the use of checklist should be used. Not only expert to the field, but those experts they should also know about the procedure and the construction of the checklist. So if they are experts, they are immediately educationists, and they are known to the procedure that how a checklist is made and what are how we can ensure the validity of the content. So then obviously the results there will be a valid component, a valid piece for the assessment of different procedures. Rating scales, they are widely used to assess behavior or performance. Behavior, again, if we are assessing the affective domain, or performance when we are assessing the psychomotor domain. And usually these both can be checked in a single act, in a single role play, by a checklist, which we can call as the rating scale. They are particularly useful for assessing the personal or professional attributes, generic competencies, and attitudes, which combine both the psychomotor and the affective domain. The essential feature of a rating scale is that the observer is required to make a judgment along a scale that may be continuous or it may be intermittent.
An unavoidable problem of rating scale is the subjectivity and low reliability of the judgment. As we discussed in the previously, that checklist या जो rating scale है इसकी validity तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन as if there is different observer from one to other कंपनी ऑफ द स्टेशन, तो इसकी वजह क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन जो है ये हर एक डिफरेंट हो सकते हैं. दैट इज द रीजन इट हैव द रूलरेबिलिटी. सब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि सपोज मैं एक एक्शन को जो है उसको देख रहा होता हूँ, इफेक्टिव डोमेन उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और साथ साथ एक दूसरे एग्जामिनर भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम दोनों में डिबेट हो सकती है अबाउट दिस एक्शन, अबाउट इट्स स्कोरिंग. एंड समटाइम्स इसको इस कंपोनेंट में डिवाइड करने का फायदा ये होता है कि सब्जेक्टिविटी को जो है थोड़ा सा कम करके और ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा हो. लेकिन फिर भी जो है इस तरह की ऑब्जर्वेशन में ये सब्जेक्टिविटी वाला प्रॉब्लम बहुत आती है कि जो दोनों ऑब्जर्वर्स जो है, दोनों एग्जामिनर्स जो है उसमें डिफरेंट व्यू ऑफ पॉइंट हो सकती हैं. सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्टिविटी इन चीज़ों की जो है रेटिंग स्केल की जो है रिलेबिलिटी थोड़ी सी जो है और ये इनएविटेबल होती है. वी कैंट avoid this thing because subjectivity and observation that point of view that may be different between different examiners, and hence the problem of the limited reliability is inevitable. To be fair to the student, however, multiple independent rating of the same student undertaking the same activity are necessary. And इससे क्या होगा, इससे थोड़ी सी जो है और रिलेबिलिटी जो है उस थोड़ी सी जो है कम इफेक्ट होगी. It is also important to train the observer to use the rating form. If they are trained, so obviously their subjectivity जो है वो different in their view नहीं होगा, and there will be consensus उस पर होगी किसी पॉइंट पर. So उससे क्या होगी भी ये reliability ज्यादा मुतासिर नहीं होगी. Subjective versus subjective assessment ये तो ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया. ये दैट डिपेंड ऑन, सपोज जस्ट सिंपल एग्जांपल ये भी हो सकती है कि सब्जेक्टिव असेसमेंट का मुराद ये है कि उसमें एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करती हैं, और टू द पॉइंट उसमें बात नहीं होती बल्कि एक डिबेटेबल बात होती है. ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से मुराद सिर्फ ये है कि सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल उसने कंसेंट लिया या नहीं लिया, सो इट इज ऑब्जेक्टिव, यस और नो. लिया तो इट्स ओके, नहीं लिया तो बस इट मीन 0 मार्क्स. तो जबकि अदर हैंड सब्जेक्टिव में है कि उसने कंसेंट किस तरह लिया. सही, कंसेंट जो है उसने लिया, उसके अल्फाज क्या थी, ये प्रॉपर वर्ड थे, ये प्रॉपर वर्ड नहीं थी, ये थी. तो ये जो है फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मोस्टली जो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मोस्टली जो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होती हैं या कंपिटेंसीज होती हैं, तो उसमें जितनी ज़्यादा ये फैन बंदे होंगे, इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे होंगे, जितनी बंदे यूज टू इस फॉर्म के साथ होंगे, इस रेटिंग्स के साथ यूज टू बंदे होंगे, उसमें उतनी ही जो है सब्जेक्टिविटी जो है कम होगी और ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी. एंड दैट्स वाई उसका फायदा यही होगा कि उसमें जो रिलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम मुतासिर होगी. फिर भी कुछ हद तक अगर हम जितना भी कोशिश करें उसमें कुछ ना कुछ जो है रिलेबिलिटी जो है इफेक्ट होगी. Objective structured clinical examination, this is actually the best alternative to those rating scale, जिसमें ये है कि उसमें हर एक कंपोनेंट की को किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी प्रोसीजर को एसेंशियल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर उसी कंपोनेंट के होने न होने को फिर मार्क्स दी जाती हैं. तो दिस इज वन ऑफ दैट थिंग जिसमें सब्जेक्टिविटी जो है बहुत बहुत कम होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. की स्ट्रक्चर भी होता है और ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है. सो जिस इससे क्या होती है, इसकी जो वैलिडिटी के साथ साथ जो रिलेबिलिटी है ये भी काफी अच्छी होती है. So the ASCII is primarily used to assess the basic clinical skills. Students are assessed at a number of stations
डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, लेकिन इसमें ये ख्याल रखनी चाहिए कि एक स्टेशन पर एक एग्जामिनर, यानी हर एक अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स एक स्टेशन पर आते हैं, उस स्टेशन पर डिफरेंट एग्जामिनर्स नहीं बल्कि एक एग्जामिनर होने चाहिए। सपोज देयर आर 10 stations, so there should be 10 examiners, और एक एग्जामिनर अगर स्टार्ट पर स्टूडेंट जिस स्टेशन पर होता है टिल एंड तक जो है उसको उसी स्टेशन पर होना चाहिए। तो उसकी वजह ये होगी कि उसमें रिलेबिलिटी जो है मुतासिर नहीं होगी। सो दैट्स वाई द स्टूडेंट्स, जो इसकी जो हर एक स्टूडेंट जिस स्टेशन पर भी आएगा उस पर ऑब्जर्वेशन उसकी जो सिमिलर होगी, और उसकी जो वैलिडिटी के साथ साथ जो है अच्छी अवेलेबिलिटी भी होगी। तो स्टूडेंट आर असिस्ट एट अ नंबर ऑफ स्टेशंस, ये हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आस्की एंड आस्पी को अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। कितनी स्टेशन होनी चाहिए, स्टेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, किस स्टेशन क्या होता है, वो फिर हम डिटेल से उसमें डिस्कस करेंगे। So assist at a number of stations and discrete focused activities that simulate different aspects of the clinical competencies. मुख्तलिफ competencies हम उसमें assist कर सकते हैं। At each station, standardized patient, real patient or simulators can be used, and demonstration of specific skills can be observed, and might that depend on the level of the students. Mostly जो इनिशियल सेमेस्टर के होते हैं, तो वहां पर अगर आप उनसे कुछ मॉड्यूलर सिस्टम में भी अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन करते हो, दे डोंट हैव दैट स्पेसिफिक एंड हाई लेवल नॉलेज, तो वहां पर आप फिर जो है सिमुलेटर्स या स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हैं। बट इफ दे आर हाई लेवल है, तो वहां पर फिर आप रियल पेशेंट भी जो है यूज कर सकते हैं। ASCII stations, they may also incorporate the assessment of the interpretation, non-patient skills and technical skills, as well as वहाँ पर उनकी जो different attitude है, so different जो effective domain है उसके components जो है भी ही assess हो जाते हैं। Each student is exposed to the same station and assessment. Suppose there are 10 stations, but just like हमने कहा कि teacher जो है एक station पर from स्टार्ट टिल एंड होनी चाहिए, इसी तरह हर एक स्टूडेंट ने जो है वो 10 स्टेशन में से गुजरना होता है। आस्क स्टेशन में भी शॉर्ट और लॉन्ग, फ्रॉम 5 to 30 डिपेंडिंग ऑन द complexity of the task. The number of stations may vary from as few as 8 to more than 20, although an ASCII with 14 to 18 stations is recommended to obtain a reliable measure of performance. If the number of stations is less, so obviously उसकी reliability भी मुतासिर होगी। तो जितनी ज़्यादा स्टेशन होगी उतनी ही उसकी reliability अच्छी होगी। अभी रिसेंटली जो KMU में हेल्थ साइंसेस एग्जाम हो गया था डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के पहले सेमेस्टर में, शुरुआत हो गई है KMU में। इससे पहले जितनी भी हेल्थ साइंसेस की BS प्रोग्राम थी, जो नर्सिंग थी, पैरामेडिक्स थी, BS या DPT थे, उन सब में आस्की ऑस्पी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन प्रीवियस ईयर दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने आस्की एंड आस्पी जो है जो BS प्रोग्राम्स हैं, जो DPT हैं, जो नर्सिंग उसमें शुरू की हैं, तो वहाँ पर 10 स्टेशन जो है ये रखे गए थे। तो ये डिपेंड करता है, आप 20 पे कर सकते हैं, 28 पे कर सकते हैं, ये कम से कम 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा होंगी उतना है जो है उसकी अच्छी जो है रिलेबिलिटी होगी। Scoring is done with a specific task-specific checklist or a combination of a checklist and a rating scale. Global rating produce equivalent results as compared to checklist, but why we have discussed the difference between the ratings and the checklists. The scoring of the students or trainees may be done by observer. The observer may be faculty member, they may be patients or standardized patients. Short cases, this is another way of assessing the practical skills of the students. उनकी different competencies जो है ये check कर सकते हैं, specifically the competency related to patient, उनकी जो clinical competency है ये हम short case से assess कर सकते हैं। In this type of assessment, students are asked to perform a supervised focused physical examination of a real patient and are then assessed on the examination technique. The ability to elicit physical signs and interpret these findings correctly. Several cases are used in any one assessment to increase the sample size.
Long cases, this is most commonly used as compared to the short cases for assessing the clinical competence. In the long cases, the students interview and examine a real patient. Different questions जो है उनसे हिस्ट्री जो इनकी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है, उनकी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी होती है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी होती है, और फिर ऑब्जर्वर जो सिर्फ ये देखता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्पेशल रिलेवेंसी है उस क्वेश्चन की, ये उसने पूछी है कि या नहीं पूछी। अगर वो मिस करता है तो इसकी डिडक्शन होती है, और अगर वो क्वेश्चन वो कर लेता है तो उसकी ऑब्वियसली मार्क्स दी जाती हैं। तो यहाँ पर उनकी जो हिस्ट्री टेकिंग होती है, जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती हैं, जो टेबल टॉक होती हैं, जो क्वेश्चन आंसर सेशन होती हैं, और उसके साथ साथ फिर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी आ जाती है। तो दोनों एग्जामिनेशन की जो है वो कर लेते हैं, और फिर नॉट ओनली जस्ट observer is checking the how he is done with the subject and objective examination, बल्कि फिर ये जितनी भी डेटा इन दोनों एग्जामिनेशन से टुगेदर कर लेता है, इसके फिर किस तरह ये इसको समराइज करता है, किस तरह इंटरप्रेट करता है, किस तरह जो है इसको इसी फाइंडिंग को यूज करके फिर आगे जो है उसी से डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यूज करता है। तो ये सारी जो समराइजेशन है, ये भी जो है ऑब्जर्वर जो है चेक करता है। सो देन समराइज देयर फाइंडिंग्स टू वन और टू एग्जामिनर्स who question the students by an unstructured oral examination on the patient problem and other relevant topics. उसके पास कुछ नोट्स होंगे, और इसी पॉइंट्स के बेस पर जो ऑब्जर्वर है उससे पे ओरल वाइवा लेता है, उनसे क्वेश्चन करता है कि, और ही विल जस्ट फाइंड द आंसर फ्रॉम द डेटा ही हैव और शी हैव। तो उस इसलिए ये स्टूडेंट जो है इतनी मतलब रेलेवेंट के साथ साथ काफी डिटेल से जो है उससे इतना डेटा ले लेता है कि किसी भी आंसर को इनफ जो है आंसर दे सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली नोन एज द लॉन्ग केसेस। तो इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होती है कि चूंकि स्टूडेंट और उसको टाइम दिया जाता है, अनलाइक द शॉर्ट केसेस कि जिसमें उसकी स्किल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें ये होता है कि ऑब्जर्वर जो है ये सिर्फ उससे क्वेश्चन करेगा बाद में, व्हेन ही जस्ट गेट टुगेदर ऑल द डेटा कर लेता है। तो लेकिन उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उसमें नहीं होती। दो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जिस तरह हमने P2 और P3 में डिस्कस की थी, लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है ये वो नहीं होती। इसमें सिर्फ ये होता है कि पेशेंट का पहले से ऑब्जर्वर को पता होता है कि किस टाइप का पेशेंट है, किस डिजीज के साथ है, और इसकी कंडीशन क्या है, इसके डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, किस साइन एंड सिम्टम से हैं। लेकिन ऑब्जर्वर को तो नहीं पता, तो ये उससे हिस्ट्री लेता है, उससे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेता है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ले लेता है, उनसे अपनी लिए और डेटा समराइज करते लिख देता है, और फिर जो है उसी से क्वेश्चन एक ओरल वाइवा होती है उसी पेशेंट के रिलेटेड, डॉक्टर उससे क्वेश्चन करेगा, और ही जो है उसको जस्टिफिकेशन के साथ फिर आंसर करेगा ऑन द बेस ऑफ द फाइंडिंग ही हैव और शी हैव फ्रॉम द पेशेंट। The line case has face validity and authenticity since the task undertaken resembles what the doctor does in real practice, because the patient is real. So that's why it is just what is going in the real life experience in routine duties of the doctor. However, the use of long case assessment in high stakes summative examination is not recommended. और अच्छा, हाई स्टेक समेटिव एग्जामिनेशन का का मतलब ये होता है कि जो एंड ऑफ प्रोग्राम होती हैं, जो एंड ऑफ कोर्स होती हैं, जो एंड ऑफ डिग्री होती हैं, जो एंड ऑफ स्पेशलाइजेशन होती हैं, सो दिस इज एक्चुअली नोन एज द समेटिव एग्जामिनेशन। हाई स्टेक का मतलब होता है कि हाई लेवल पर उसकी, तो उसकी क्यों जो है रिकमेंडेशन क्यों नहीं है, अगेन जैसे हमने पहले कहा कि इसकी तो फेस वैल्यूटी बहुत अच्छी होती है, बहुत वैल्यूटी हाई होती है, लेकिन इसकी जो रिलेबिलिटी है इसकी बहुत कम होती है, और इसी की वजह से जो है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द हाई स्टेक समेटिव एग्जामिनेशन। मोस्टली जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ एरियाज एंड यूनिवर्सिटीज़ में इसको बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया जाता। Its use in formative examination is encouraged because of its perceived educational impact, but unlike the formative examination, it is not recommended in the summative examination. हमने इन दोनों को पहले से भी डिस्कस किया है कि व्हाट वी मीन
from the formative examination and what is the summative examination. यहाँ पर this is the assessment difference between the formative and summative assessment. What is the formative assessment? Formative assessment जो है, this is goal to monitor students' learning, to provide ongoing feedback that can be used by instructors to improve their teaching and by students to improve their learning. आसान सी मिसाल ये है कि ये सपोज एक सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर में डिफरेंट टेस्ट होती हैं, उनमें मिड टर्म एग्जाम होती है, उसमें डिफरेंट प्रैक्टिस वाइवा होती हैं. सो इट मीन एट द मिड ऑफ द सेमेस्टर, एट द मिड ऑफ द एग्जाम उनसे कुछ एग्जाम ली जाते हैं, और उससे क्या होता है कि एक तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी जो है वो परखने के लिए कि भाई हाउ मच दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड माय मेथोडोलॉजी, तो फिर आपने मेथोडोलॉजी को चेंज करना पड़ता है. तो ये जो है ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है डिफरेंट एग्जामिनेशन जो होती हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट जो है यूजुअली दे आर टेकन एट द एंड ऑफ द डिग्री, जब कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है और उसी एग्जाम के बेस पर उनको डिग्री दी जाती है. नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाता है, या उसको जो है वापस जो है ये कोर्स वर्क करना पड़ेगा. तो दैट इज एक्चुअली समेटिव असेसमेंट. So summative assessment goal is to evaluate the students' learning at the end of an instruction unit by compared against some standard or benchmark. Standard mean का मतलब ये कुछ suppose जो KMU के health sciences programs है, वहाँ पर 60% पे पेपर suppose पास है. तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट जो है मिड टर्म में उसके 30 मार्क्स भी आ जाते हैं, दैट डजंट मैटर, उस 30% को सिर्फ 20% जाएंगे. लेकिन अगर फाइनल एग्जाम में फिर इसके मार्क्स 60% से कम आ जाते हैं आउट ऑफ 100, तो ऑब्वियसली उस पेपर उसका जो है कम कंफर्ट आएगा, फिर उसको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा. तो ये डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट. तो जैसे हमने प्रीवियस देखा कि ये जो लॉन्ग केस है, बिकॉज ऑफ इट्स फेस ऑथेंटिसिटी एंड हाई फेस वैलिडिटी, और इसकी एजुकेशनल जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छी होती है, सो दे कैन बी used in the formative assessment, but it is not recommended in the end term or full term or the final term summative assessments. These are some of the difference and comparison between the formative assessment and the summative assessment. The blue one is the formative and the red one is the summative. So evaluation during the learning process, while evaluation is at the end of the कोर्स कंप्लीशन, जब कोर्स जो जितना भी उनका जो कोर्स वर्क है कंप्लीट हो जाता है, फिर इनमें एंड में एक एग्जाम लिया जाता है. सो दिस इज द समेटिव एग्जामिनेशन. मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, हाउ द क्लासरूम में लर्निंग की क्या सिचुएशन है, हाउ दे आर मूविंग, हाउ दे आर लर्निंग, कितने स्टूडेंट जो है दे आर कौन से कैटेगरी में है. जबकि यहाँ पर उनकी ग्रेड दी जाती हैं, कुछ जो है वो अच्छी जीपीए में आती हैं, कुछ जीपीए कम आती हैं. Similarly, in the formative assessment, the purpose is to improve the students' learning on the basis of the results. उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उन टीचिंग वो चेंज हो सकती हैं, उनमें जो डिफरेंट स्ट्रेटजी है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं. जबकि समेटिव एग्जामिनेशन के असेसमेंट का जो पर्पस होता है वो होता है कि टू एवेलुएट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट. Similarly, if we talk about another classification comparison between these two, so this is कि this formative assessment जो है ये evaluations include little content areas. जैसे for example मेटा में हम बोल दिया टोटल curriculum जो है उसका 10%, 20%, 30% इसमें एग्जाम लिया जाता है. जबकि इवैल्यूएशन जो है इन द समेटिव एग्जाम, दे कंप्लीट curriculum, जितने भी उसकी curriculum 100% curriculum इज बीन इंक्लूडेड फ्रॉम ए टू जी, जितना भी है वो कंटेंट उसमें शामिल होते हैं. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट इट इज कंसिडर्ड इवैल्यूएशन एज अ प्रोसेस, जबकि समेटिव एग्जामिनेशन जो है दिस इज कंसिडर्ड इवैल्यूएशन एज अ प्रोडक्ट जो है. So that was just a discussion between the summative examination and the formative examination, and what is the difference between these two. Now, how we can increase the validity and reliability of long cases. So different modifications have been introduced
to enhance the validity as well as the reliability of these line cases. For example, observing the candidates while they interact with the patient, as we discussed previously, in that there is no direct observation. So one thing in which we can increase, we can enhance the modification and the reliability of this long cases, there should be direct observation. So although observing the candidate is not a major contributor to reliability, but still it may help in the enhancement of the reliability. Training the examiners to structure examiners process and increasing the number of cases. Another method of assessment, this is the 360 evaluation, and as compared to the previous long case, short case in the ASCII, this 360 evaluation, this is a multi-source feedback assessment. And 360 evaluation is a multi-source feedback assessment system that evaluates an individual's competence from multiple perspectives. Feedback is objectively and systematically collected by a survey or rating scale that assesses how frequently behavior is performed. एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जहाँ पे चेकलिस्ट और जो ग्लोबल रेटिंग यूज होते थे, यहाँ पे जो है रेटिंग्स के साथ साथ सर्वे जो है वो भी जो है यूज होते हैं. जस्ट एक फीडबैक लिया जाता है और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट जो है असेस की जाती है, नॉट ओनली जहाँ पे मेयरली क्लिनिकल कैपेबिलिटीज जो है वो असेस किया जाता था. यहाँ पे जो है मल्टीपल जो है पर्सपेक्टिव जो है असेस, मल्टीपल कॉम्पिटेंसी जो है उसकी असेसमेंट हो सकती है. Multiple evaluators who may include the supervisors, the peers, the students, administrative staff, patients, and families rate training performance in addition to the training doing a self-assessment. And that's why different aspects से जो है वो feedback आती है और फिर उसी feedback के base पर जो है decision लिया जाता है about the grades of the. लेकिन as compared to the previous methods, 360 evaluation is very rarely used in the student. The reason is that the students are very rarely involved in the real life uh, environment, and 360 evaluation is the best assessment method for the doctors, for those who are working in hospitals, yeah, who are working with real life, real patients. The rating scales vary with the assessment context. This evaluation have been used to assess a range of competencies, including the professional behaviors at undergraduate and the postgraduate level. But most commonly it is used at the postgraduate level, and very rarely it is used at the undergraduate level. However, the use of 360 evaluation in summative assessment is not educated due to the lacking of reliability and validity. Again, it is feedback from the different sources. That's why there may be a variation among the observation of a person by different evaluators. So that's why, because of the different number of evaluators, because of the different point of view of the different evaluators, it have both less validity and reliability, and that is one of the reasons why 360 is not the part of the summative assessment. Their use in the formative evaluation might be more appropriate since evaluators provide more balanced and honest feedback when the evaluation is formative and used for the development of purposes rather than pass fail decision. As हमने पहले डिस्कस किया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम जो है मॉडिफिकेशन ला सकते हैं. सपोज वहां पर फीडबैक जो है नेगेटिव आ रही है, सो हम वी विल वर्क ऑन आवर स्ट्रेटेजी, वी विल वर्क ऑन मेथडोलॉजी ताकि हम उस को पॉजिटिव करें. तो वहां पर हम इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस तरह की जो 360 evaluation ये बहुत काम कर सकती हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द जहां पर हमारे लिए फिर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और टाइम नहीं है, बस द कोर्स वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड, द टाइम ड्यूरेशन इज बीइंग कंप्लीटेड, तो फिर अगेन बिकॉज ऑफ इट्स लो रिलायबिलिटी जो है वी कैन यूज इट इन द summative examination. It should be borne in mind that this type of evaluation can be time consuming and administratively demanding. And this is one of the factors among the many that why it is not used so commonly. So this is an example of that 360 evaluation form, which is a Likert scale.
Likert scale is a scale in which there are uh, odd number of options. Just for example, one is I don't know. This is the midpoint, and या उसको हम कहते हैं कि न्यूट्रल भी कह सकते हैं. और फिर उसके बाद जो है there are two four options. जैसे for example, one is if there is 3 point, it means neutral. I don't know. Yes, I agree, and I don't agree. So this is a 3 point Likert scale. Most commonly, five Likert point Likert scale is used. Otherwise, there is 3, there is 5, there is 7 as well. And five, there is suppose one is neutral, which is in the mid. And on both sides, there is agree or disagree, or then strongly agree or strongly disagree. So different questions and different components, they are asked from the different evaluators, and then they will answer according to this Likert scale, that they agree or disagree, or they don't know, that they are neutral about this component. And then उसके फिर जो है इसमें होती हैं by the जो examiners do exam. This is another examination assessment method which will be discussed in the next session. In this session, we discussed the difference between the summative examination and the formative examination. We also discussed the short case assessment, the long case assessment. We discussed the ASCII. हमने इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा बिकॉज हम उसको अलग सेशन में ज़्यादा डिटेल के साथ फिर डिस्कस करेंगे. हमने उसके 2 कैटेगरीज भी डिस्कस की कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट कैटेगरीज, कि जिसमें हम ये कर सकते हैं कि रियल लाइफ एक असेसमेंट है कि ये जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट में है. सही. सो थोड़ा सा ये इसको हमने चेकलिस्ट भी बात की, हमने ग्लोबल रेटिंग के बारे में बात की कि दोनों में कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसकी रिलेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी जो है वेलिडिटी ज़्यादा है. तो ये हमने डिस्कस किया. इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम दैट next assessment, which is the short mini clinical evaluation exercises, which is shortly also known as the mini CEX. So meet in the next semester. Thank you so much to all of you.